गणेश जी उस मूर्ति में आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, पानी में वो जब तक पूरी डाइल्यूट नहीं होगी तब तक गणेश जी को छुटकारा नहीं मिलने वाला है उस मूर्ति से। पर होता क्या है, पानी कम हो जाता है, मूर्ति वैसी गिरी रहती है और वो मूर्ति के आसपास में कचरा हो जाता है, सब होता है। इसका मतलब गणेश जी के आसपास कचरा हो गया ना। हैव यू सीन दोज आइडल्स आफ्टर विसर्जन? घर में गणेश जी की मूर्ति हम उसकी रोज पूजा करते हैं, तो गणेश जी पहले से घर में है, लेकिन इसके बाद भी हम क्या करते हैं, 10 दिन के लिए बाहर से और एक गणेश जी लेकर आ जाते हैं। गणपति को बिठा देते हैं ऐसे सामने, झिंगट 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 चालू, देन डिफरेंट काइंड ऑफ inappropriate song, चिकनी चमेली and all. But people do Satyanarayan Puja. Actually, Satyanarayan Puja falls into Vaishnav, not in Shaiva. So, as per my study and overall the background of this festival, Satyanarayan is irrelevant. You are doing wrong, and that is not as per Shastra. पंडित जी आएंगे, कोई भी बोलेंगे, सुनो मत, क्योंकि उनका स्टडी कितना है इस पर हमको सवाल होता है। एलिफेंट एंड मूषक. मूषक is a small, elephant is so big and huge, but even a small part of this universe can carry the load of elephant. Tiso Vive and Namaste. My name is Arohi Mande. My name is Saishri Jaju. And my name is Gunjal Telang. And you are watching School Talk News channel. Every year we celebrate Ganesh Utsav on a grand level. To know more about this festival, we are here conducting a podcast with our honorable school manager Subodh Jaju sir. Let us start our interesting podcast with our first question. Namaste, sir. Namaste. So our first question is, when and why did this festival become a public occasion? This festival became public occasion in the 19th century. As you must have read in the history that the Britishers, they had banned our people to come together and gather. So to break that, religious cause was the best reason. So Bal Gangadhar Tilak had used Shiv Jayanti and Ganesh festival as to make as a public occasion and gather people together, and through that gathering he was spreading awareness about the freedom fighting, our culture, our beliefs, and making people ready to fight for the freedom. Are there any regional variations in the celebration of the festival? Regional variations depends upon the culture to culture, but not regional, I'll say divisional. Because if you'll go in Konkan place, there's Ganesh Utsav in different sense. In Marathwada, it's celebrated in different sense. In Vidarbha, it's in different sense. Like somewhere it is for 10 days, somewhere it is for 1 day, somewhere it is for half day. Okay. But because the people are so busy, like Kokni people used to go in Mumbai to work, and coming from their job and going back again on the job, so they were not getting that much holidays from the organizations where they were working. That's the reason for at least 1 day, half day or 2 day, 5 day, they have started celebrating it. Even like what Naivedya and other people usually don't offer non-veg to God. But in Konkan, few Koli tribes, they offer machli also, okay, like fish, because whatever they are eating, they are offering to God. That is the belief behind it, and they are thankful to God, that's why they are offering it. So our next question is that how can we make this festival sustainable? The festival itself is a sustainable. We can sustain with the festival. So question can be, how can make this festival more interesting and like diversity and other things, how can we inculcate into that? But festival is sustainable, it's getting sustained since last more than 100 years. So, what is the impact of Ganesh festival on local businesses and communities? It's a huge impact. Ganesh festival has thousands of crores turnover. Even local like food suppliers, pujari, okay, the pujaris, food suppliers, mandapwala, transportation, murti makers, like these all people get involved into that, and they used to do sale and purchase. So it's huge impact, and this gives a boost to our financial growth as well of the country. So in the center ministry or state ministry also, all our festivals, not only Ganesh festival, but Ganesh festival, Diwali festival, even Rakhi and all, these are planned separately, and these boost up our industry, local industry,
trade industry, service industry as well, because event managers are there, light providers are there, stage providers are there involved into this festival, idol makers, murti makers, what we say, then food suppliers. You must be eating lot many kind of things, modak and like sweets, they are distributing to others. So entire country, not only country but foreign countries are also involved into this business. So this gives huge boost to our business. So are there any environmental concerns related to the celebration of Ganesh Utsav? Yes, there are few environmental concern and you must have heard about noise pollution and water pollution, because idols are made with such kind of material which don't get diluted into water, but still people they are procuring only POP material or such kind of chemical made idols only, so which is causing environmental pollution, especially water pollution. And noise, we are like fed up with telling all the people that don't use DJ on high volume. Even government is also asking them, they have banned with some dB, after this time you shall not do, but they are playing music on loud volume, so it creates noise pollution. What is the logic behind the Ganesh idols to dilute in water by Visarjan? Look, you will have to understand Visarjan first, why it is called as a Visarjan, okay, and what is logic behind that, what you have asked, it's a very good question, because people usually don't know why we are doing this. Here many students are also sitting. I would like to ask them, do you know why we are doing Visarjan? Okay, even you, do you know? In Rigved it is written, and even in Ganesh Sukta and all it is written, like whoever is coming on this earth has to die, okay, but gods are immortal, so they cannot die, but ultimately when their devotees like we are calling them, it's called as a avahan. When we do pran pratishtha of any idol at home, so what pran pratishtha means, what pran means life, okay, pratishtha means making settle into that. So pran pratishtha when we do, so it is believed that God comes into that, and then we start praising or like puja and all things. But after 10 days God has to go back, and in Indian culture or Hindu culture, what we do, if somebody dies, we used to burn, correct, fire में डालते हैं उसे, but we cannot fire the idols, okay, or God. So gods can be sent back from this earth to their places through the water only, because water has life, and when we are diluting that idol into water, it believes that God is there as a life and providing us life, and God is floating with the life, okay, because it's immortal. But what happened? Usually POP, we are knowing the concern about the water pollution only and environmental concern only, but this is the biggest concern, that God idol are not getting diluted in water. That means God is stuck into that idol, correct? God must be stuck into that idol. So now imagine, God's idol is there in water, and after some days or some time that water gets poured away and idol remains there. Have you seen those idols after Visarjan? These are full of dirt, बदबू होती है उनके आसपास में. So just imagine, if we believe that Ganesh ji is there in that idol to whom we have worshipped for 10 days, and after those 10 days if that idol lying into dirt, into garbage kind of thing, what Ganesh ji will do? Ganesh ji क्या करेंगे हमको? आशीर्वाद देंगे? नहीं. So why we are doing this? And logic behind idol, I'll tell you, because we believe in our Hindu culture that gods are the part of our life. They are also our family member. हम गणेश जी के साथ में खेलते हैं, कृष्ण जी के साथ में खेलते हैं, करेक्ट है, उनके ड्रेसिंग करते हैं, हम मानते हैं कि वो हमारे घर में बैठे हुए हैं, और हम क्या करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, वी वर्शिप देम एज आवर फैमिली मेंबर. बट नाउ इमेजिन when in 20th century Lokmanya Tilak ji had started this as a public festival. So then only people started gathering together, and there they were on temporary basis were making
one temple for 10 days where they were keeping Ganesh idol and they were worshipping that. But after 10 days, because they could not make it permanent, they were taking that idol for Visarjan. Correct? So this is logical, because they could not make that temple there. Everywhere they could not make temples. Correct? So they were just gathering, because purpose of that was gathering together for the Indian people and making awareness for the freedom and culture and all things. So then after they were diluting that into water, they were saying goodbye to Ganeshji. Okay, and because they were made with the clay, natural clay, so it were diluting in water also. But nowadays a big silly thing I will be telling this, because many people and even you must be doing at home. We are having Ganeshji in your puja, our puja ghar. You have that? घर में है, घर में गणेश जी की मूर्ति हम उसकी रोज पूजा करते हैं, तो गणेश जी पहले से घर में है, लेकिन इसके बाद भी हम क्या करते हैं, 10 दिन के लिए बाहर से और एक गणेश जी लेकर आ जाते हैं, है ना. तो जब गणेश जी वहां पर बैठे हैं, दूसरे गणेश जी आ गए, पहले गणेश जी तो कंफ्यूज होंगे, मैं कौन, है ना, ये कौन, और जब मैं यहाँ बैठा हूं तो इसको क्यों लाया, वो तो मैं ही हूं. एंड देन आफ्टर यू विल बी स्टार्टिंग वर्शिपिंग बोथ द गणेश आइडल्स. ओके, सो गणेश जी अगेन कंफ्यूज. अच्छा, next to that, you are having now 2 Ganesh idols, one permanent, one temporary, in home. Then in society or colonies also you are having another Ganesh. That's a public Ganesh. Then again you are doing puja at home, then you are going there. Ganesh ji again confused, अरे उधर पूजा की थी, अब इधर भी आ गए, मैं हूँ किधर. Correct? And the big thing is that when you are taking that Ganesh idol for Visarjan, the big public idols, okay, they are taking, जैसा हम बोलते हैं ना, मंडल वाले ले जाते हैं. Then what we are doing, एक गणेश जी है, उसके बाजू में 50-100 गणेश जी, और गणेश जी फुल्ली कंफ्यूज, अरे बाबा मैं हूँ कौन, कहाँ किधर हूँ. Okay, and then we are diluting that, and that temporary Ganesh idol which we brought in the home and keeping that with our permanent Ganesh idol also, we are going and diluting that in water, विसर्जन करके बाय बाय बोले. अब बाय बाय बोले तो घर में कौन, तो गणेश जी घर में है क्या नहीं है. सो दिस इज अ ब्लाइंड फॉलो, एंड अनफॉर्चुनेट इज दैट मंदिर वाले भी यही करते हैं, बड़े बड़े मंदिर वाले. वो मंदिर तो परमानेंट है, वहां तो गणपति है, आइडल है, बट व्हाट हैपन, वहां भी मंदिर में और टेम्पररी 10 दिन की एक मूर्ति लाकर रखते हैं. तो कम से कम पुजारी लोगों ने तो गलती नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज रिटन इन आवर वेदास वेरी क्लियरली that whoever has come on the earth has to die, and because the gods are immortal, they can only dilute it in water, because water is a life. So this is belief behind that. So I'll urge all the people who are sitting here or who are watching this podcast through you, kindly refrain bringing temporary idol at home if you have one Ganesh idol permanently in your puja ghar. You are doing wrong. एंड दैट इज नॉट एज पर शास्त्र. पंडित जी आएंगे, कोई भी बोलेंगे, सुनो मत, क्योंकि उनका स्टडी कितना है इस पर हमको सवाल होता है. करेक्ट है, दे आर डूइंग पूजा, बट आर दे हैविंग थोरो नॉलेज ऑफ दिस? आई डोंट बिलीव, दे डोंट हैव. एंड वन मोर थिंग, काइंडली डोंट रन बिहाइंड अ ब्यूटीफुल आइडल. कितना अच्छा दिखता है, इट इज पीओपी. पीओपी के आइडल बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, गणेश जी को तकलीफ दे रहे हो. सोचो उनके जगह आप हो, मैंने आपको जाकर पानी में डुबाया, फिर पानी सूख गया, सूखने के बाद में आप वैसे ही बैठे हो और आपके पास में इधर कचरा लगा है, इधर कचरा लगा है, आजू बाजू गंदगी पड़ी है. हाउ विल यू फील दैट? यू बिलीव ना दैट गणेश जी केम इन योर होम, यू बिलीव दैट ना. तो अगर आपका बिलीव करेक्ट है, सो कंसिडर दैट एज ए लाइव गणेश जी, एंड दैट इज द करेक्ट बिलीव आई गेस. तो अपने घर में पहले से परमानेंट जो मूर्ति है उसी की पूजा करो, नया टेम्पररी लाने की जरूरत नहीं है. Sir, nowadays people when they are taking Ganpati at the society home, they are dancing and playing game, but at the past time what they were doing? Actually in the past they were playing lot many things. I mean what I have understood from your question, that you must be talking about they are playing music and they are dancing and something, correct? So when DJs were not there, people were performing different kind of arts. Even nowadays, if you'll go in the center Pune or somewhere in village areas, you will see that people are doing martial arts, talwar baji, lathi kati. They are performing dhol, lejhim, fugdi.
Jhimma, as well as they are singing. So they were making jhaki, they were coming in different dresses. So they were doing lot many activities in earlier days. But nowadays actually people are taking disadvantage of that DJ and all. You tell me what Ganpati has to do with the झिंगाट, है ना? गणपति को बिठा देते हैं ऐसे सामने, झिंगाट 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 चालू. Then different kind of inappropriate song, Chikni Chameli and all, correct? So even like songs, English songs and all, and they are making noise, which is cause of noise pollution also. I have seen small kids, they were not able to hear after they went to the Visarjan Mironuk and this, because even people who are having high blood pressure and palpitation, they cannot stand in front of the DJs also. So I guess the concept of this Ganesh festival is to spread awareness of our culture, even to understand our beliefs and the nation. So such kind of things only we shall have to play on the music, that too not to disturb others, not to disturb traffic as well, and that shall be more knowledgeable for others. My question is that there is a story behind Visarjan, that after Visarjan the Ganpati Lord, they went to their parents. So is it true about that? आप कहीं से निकल जाओगे तो किसी बाहर गांव जाके आओगे तो कहाँ जाओगे? पेरेंट्स के पास जाओगे ना? So that is belief. As I said that we believe that gods are also part of our family. They come for few days in our home, okay, to celebrate this festival, and when we send them back, they definitely go at their home only. So this is, look, I haven't seen Ganpati going by train, plane or somewhere at parents' home, but this is belief, and the beliefs are true. So why do we do Atharva Shrishta and Satyanarayan Pujan in Ganesh Utsav? Yeah, good question. Atharva Shrishta is like स्तुति of Ganesh. Okay, so जैसे आप हमारे घर में आओगे तो हम बोलोगे आप कितने अच्छे बच्चे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप हमारे लिए ये काम करो, वो काम करो, हम आपकी पूजा करेंगे. Like because as a devotee I can do that. Same thing we do with the Ganesh ji also, or other gods also. We do praise them. So Atharva Shrishta is part of praising them. But Satyanarayan, now one more thing I will be telling, and people may get hurt with this because they are not having knowledge. I have gone to through Shaiva Puran also and Vishnu Puran also. Ganesh ji is part of Shiva, correct? He is the son of Shiva. And Shaiva people, Shaiva means who are the follower of the Shiva, to whom they are praising? Shivji, Ganeshji, Kartikeya, Parvati, Durga or Nandi and all people, Gan, they are praising to them. Vishnu is nowhere therein. But people do Satyanarayan Puja. Actually Satyanarayan Puja falls into Vaishnava, not in Shaiva. So as per my study and overall the background of this festival, Satyanarayan is irrelevant. Satyanarayan is nowhere connected or related to Shaiva, so we shall refrain doing that. For Vishnu and other things we can do Satyanarayan Puja, that is also part of our culture and religion, okay. But in Ganesh festival we shall refrain doing Satyanarayan Puja. Atharva Shrishta or even Shaiva Pujan, that is okay. There are many people who collect chanda or donation from us to celebrate Ganesh festival. So is this appropriate? Having chanda is appropriate actually, because people are coming together, and together if they are celebrating, so everyone has to share, correct, to celebrate for like procuring idol or doing various activities or distributing prasad and all. There is expenditures, correct. For that only they are collecting chanda or donation, so that is appropriate. Sometimes some people are going in shops and asking shopkeeper to give 1,000 or how much limit they have. But if the shopkeeper gives them 500, 200, they means वो लोग बहुत ज़बरदस्ती से मांगते तो उसे लूट कहेंगे कि चंदा मांगना. Yes, yes, yes. This is not appropriate. अगर आप किसी को चंदा मांगने जा रहे हो, डोनेशन, what that does mean? जो दे रहा है वो अपने मर्जी से दे रहा है और जितना दे सकता है. In our puja also, if you have ever heard, whenever you are doing puja and Pandit ji coming at your home, in the beginning only they are tying one thread to your hand, है ना, कर इसमें लगाया जाता है.
फिर पानी लिया जाता है और कहा जाता है कि यथाशक्ति दान, मतलब यथाशक्ति का मतलब क्या, जितनी मेरी ताकत है, जितना मैं दे सकता हूँ मैं उतना ही दूंगा। ओके, तो कहीं ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। हाँ, ये जो ज़बरदस्ती का चंदा लेते हैं, ये आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं भाई 100 नहीं 200 दो, 300 दो, यू कैन रिक्वेस्ट, बट यू कांट फोर्स। But people usually with the shopkeepers or like people who are into business, so these Ganesh mandals many a times we have observed that they are forcing them to donate this much amount only. So we can call it as a loot. That is not inappropriate word for them. Sir, why is only Mushak chosen as a Vahana of Ganpati? Look, I'll not go behind the stories of that. कि गणेश जी का मूषक क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है. I'll come behind the logic of that. Hindu culture or Indian culture. Listen, when I'm talking about Hindus, that means Sanatan, Jain, Bauddha and Sikh. All are there. It's written in our constitution also. Okay, so in our Indian Hindu culture, every part of the world of universe is considered as a live and important. It's a life cycle. You must have learned in your EVS books also the life cycle of the world. So हम लोग एनिमल्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना हम अपने आप को देते हैं. तो मूषक है, देखिए किसी का वाहन मूषक है, किसी का वाहन मयूर है, किसी का वाहन मछली है, किसी का वाहन मगरमच्छ है, किसी का वाहन शेर है. तो ऐसा कोई एनिमल नहीं है जिसकी हम पूजा नहीं करते किसी न किसी बहाने. वी हैव कनेक्टेड देम विथ आवर गॉड्स. हमने भगवानों के साथ जोड़ा है इनको. सो खाना, मारना, जीना, ये सब कुछ है. इवन वी praise or we are devoting to the trees also, rivers also. Correct? Why? These are the part of universe. So I'll come behind the logic of that. It's very controversial. Elephant and Mushak. Mushak is a small, elephant is so big and huge, but even a small part of this universe can carry the load of elephant kind of, which is 1000 times higher than दी मूषक. यानी उसके वजन से 1000 गुना ज़्यादा का वजन रहेगा, लेकिन वो उसको कैरी कर सकता है. सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस, दैट हमें किसी भी छोटे प्राणी को या किसी भी छोटी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए. वो बड़े से बड़ा वजन जो है ना उठा कर ले जा सकता है, बड़े से बड़े काम किया जा सकता है. सो दिस इज सिग्निफिकेंस बिहाइंड दैट. एंड ऑन अदर पार्ट दैट वी शैल टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स ऑल्सो. हम यूजुअली उनको मार देते हैं, तो मारना नहीं चाहिए जब तक कि वो हमें हार्म ना करे. जब तक वो हार्मफुल नहीं है तब तक नहीं मारना है. और हमें ध्यान रखना है कि ये साइकिल है. चूहे अगर नहीं रहेंगे तो स्नेक नहीं जिएंगे, स्नेक आ जाएंगे तुम्हारे पास में. करेक्ट है? तो हर जानवर का ऐसा ही है. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मूषक? यू सेड दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड कंसिडरिंग ईच एनिमल एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इम्पोर्टेंस. Sir, you already told the purpose of celebrating Ganesh festival. So is it the same purpose now? Now the purpose is different, but yeah, outcome is same. Because when Bal Gangadhar Tilak ji had started this festival in the 20th century, the purpose was to bring all people together and make them aware about the culture, our nation, and to fight against the Britishers. Okay, but nowadays because we are into freedom now, that time we were slaves, we were not allowed to come together that time. पर अभी क्या है ना कि अभी हम तो आज़ाद हो चुके हैं. फिर अभी क्या है? सो इट हैज़ बिकम ट्रेडिशन नाउ, बट द पर्पज इज सेम. पॉसिबली वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, और पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग गणेश फेस्टिवल दे आर नॉट फॉलोइंग इट, बट पर्पज इज सेम, टू कम टुगेदर. नाउ कम टुगेदर, अंडरस्टैंड आवर कल्चर, सेलिब्रेट दैट and know about your religion, your country, your history, everything. और यूनिटी होनी चाहिए. जब लोग इकट्ठा आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? यूनिटी होती है ना. तो यूनिटी होनी चाहिए. इसमें सभी टाइप के जो जाति धर्म के लोग हैं वो इकट्ठा आते हैं. गणेश जी को मानने वाले क्रिश्चियंस भी है, गणेश जी को मानने वाले मुस्लिम्स भी है. गणेश जी को सभी लोग मानते हैं, दुनिया भर में मानते हैं. एंड यू मस्ट बी अवेयर कि दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में गणेश फेस्टिवल होता है. नॉट ओनली हमारा केवल इंडियन डायस्पोरा वहाँ है इसलिए, लेकिन पहले से होता है. जैसे थाईलैंड में होता है, इवन आपका जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में होता है, जापान में होता है, आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है. तो ये पहले से होता है.
So unity, diversity, now to maintain that shall be a cause of Ganesh festival nowadays, other than your religious cause. सर हम लोग कार में वगैरह बस गणपति बप्पा की मूर्ति क्यों लगाते हैं? ये तो बिलीव्स है बेटा, घर में भी लगाओ, कार में भी लगाओ, कहीं भी लगाओ. वी बिलीव दैट गॉड इज विथ अस. भगवान हमारे साथ है, हमारी रक्षा करेगा या हमारे लिए जो भी हो शुभ होगा. सो दीज आर द बिलीव्स, हमारा विश्वास है वो. ओके सर, थैंक यू. वेलकम. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं तो कोई लोग पीओपी की मूर्ति खरीदते हैं, लेकिन जब हम विसर्जन पे जाते हैं तो पीओपी की जो मूर्ति ये डिजॉल्व नहीं होती और वो पल्यूट करती वाटर बॉडीज, तो हम उसका प्रिकॉशन मेजर्स क्या ले सकते हैं? प्रिकॉशन मेजर तो एक ही है कि पीओपी की मूर्ति मत खरीदिए. सरकार बोलती है, लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका जवाब भी दिया है. देखिए, केवल आप कंसर्न हो वाटर पोल्यूशन से. ये वाटर पोल्यूशन का नहीं, बिलीव का पार्ट है. गणेश जी उस मूर्ति में आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, पानी में वो जब तक पूरी डाइल्यूट नहीं होगी तब तक गणेश जी को छुटकारा नहीं मिलने वाला है उस मूर्ति से. पर होता क्या है, पानी कम हो जाता है, मूर्ति वैसी गिरी रहती है और वो मूर्ति के आसपास में कचरा हो जाता है, सब होता है. इसका मतलब गणेश जी के आसपास कचरा हो गया ना. सो प्रिकॉशन एक ही है कि हम पहले अपने शास्त्र को समझे. मूर्ति पोल्यूशन के वजह से जो है पीओपी का ना खरीदे, ऐसा नहीं. गणेश जी को विसर्जित करके उनको मुक्त करके अपने धाम में वापस भेजना है, अपने गांव में, तो उसके लिए आपको मिट्टी की मूर्ति खरीदनी चाहिए. तो कितनी भी खूबसूरत मूर्ति दिखे पीओपी की, मत खरीदिए. दैट इज द बेस्ट प्रिकॉशन. ओके, थैंक यू सर. Sir, why is the Murti of Ganpati submerged after 3 to 5 days or 10 days? Sir, some people do Visarjan after 5 or 10 days. Why they change the numbers of the days? this is all as per the convenience, because it has initiated in Maharashtra, and especially Kokni people, they are always busy. They were, or even nowadays also they working in Mumbai and other area. उनको छुट्टियां मिलती थी. ये ट्रेडिशन पहले कोंकण में शुरू हुआ. अदर एरियाज में 10 डेज का ही मैक्सिमम होता है. सो फेस्टिवल इज फॉर 10 डेज ओनली, एंड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल दे हैव स्टार्टेड दिस, बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू. वो बेचारे मजबूर हैं, लेकिन वो अपने फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हैं. सो दे हैव फाइंड आउट दिस वेज कि चलो एक दिन के लिए, 3 दिन के लिए. ओके, थैंक यू. Sir, not only Hindus but other religion people also celebrate Ganesh festival. So are they against their religion? Actually, there is nothing against the religion. It's all the matter of beliefs. Okay, even like I told, कि Islamic people, even Christian people are also doing that, and more than 100 countries Ganesh festival is being celebrated. So it's not against that. It's can be against the beliefs of someone. Religion is different and belief is different. So it is not against the beliefs. Okay. Thank you, sir. Thank you. सर, गणेश जी ने एक बार बोला था कि माता पिता यूनिवर्स होते हैं, ऐसा क्यों? माता पिता किसी भी बच्चे के लिए यूनिवर्स होते हैं. जो स्कूल में जो आते, तुम देखते होंगे छोटे बच्चे, तुम भी आए होंगे, तुम अभी घर पे भी हो. तुम्हारी दुनिया क्या है? तुम्हारा कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, करेक्ट है, वहाँ आप इन्वॉल्व नहीं हो. एक छोटे बच्चे के लिए दुनिया क्या होती है उसकी? उनके भगवान बोलो, दुनिया बोलो, जो कुछ भी वो कहाँ देखता है? घर में ही देखता है. घर में किसके पास होता है? मम्मी पापा के पास होता है. मम्मी पापा को छोड़कर अगर उसे अकेला मॉल में छोड़ दिया जाए तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा. कहीं दूर उसको कश्मीर ले जाओ, स्विट्जरलैंड ले जाओ, कहीं उसको बहुत अच्छी जगह पर ले जाओ, फिर भी बच्चा क्या करेगा? रोएगा. क्यों? बाहर की दुनिया में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं, मम्मी पापा में इंटरेस्ट होता है. सो दैट्स वाई मम्मी पापा ही एक बच्चे की दुनिया होती है. सो दिस इज लॉजिक बिहाइंड दैट, एंड दिस इज करेक्ट लॉजिक. सर, थैंक यू. वेलकम. देखिए, हम क्या कर रहे हैं, सालों से किए जा रहे हैं, हमको बताया जा रहा है कि ऐसा ही है, लेकिन कई बार उसमें लॉजिक नहीं है. केवल किसी पंडित जी ने आकर बोल दिया, या किसी बहुत बड़े प्रोफेसर ने, किसी ने पीएचडी किया है, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, या कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई बहुत बड़ा टीवी स्टार, फिल्म स्टार है, उसने अगर कुछ बोल दिया तो हम बोलते कि ये सही है ना. टीवी पर भी आकर कोई बोल देता है कि ये कोल्ड ड्रिंक सबसे अच्छा. कोल्ड ड्रिंक पीने से तो दांत खराब होते हैं, हड्डियाँ खराब होती, लेकिन हम वो पीते. तो किसने क्या कहा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. लॉजिक क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो लॉजिक के साथ में हम गणेश फेस्टिवल को मनाएं और इसको समझें, इसका सिग्निफिकेंस समझें. और लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम करते हैं. ये जो हम बोलते हैं ना कि जाने दो, लोग भी तो घर में एक और आइडिया लेकर आ जाते हैं, तो हम भी गणपति की एक और मूर्ति ला लेंगे. लोग अगर गलत करते हैं इसलिए हम गलत करें, ज़रूरी नहीं. शुरुआत अपने से करते हैं. लोग नहीं भी माने तो ठीक है, हम अपना करेक्ट प्रैक्टिस करना चाहिए.
I guess that shall be outcome of your this interaction with me. Okay. Thank you, sir, for enriching our knowledge, and we will definitely try our best to celebrate Ganesh festival in the right way. Don't try. Celebrate in correct way. Thank you. Namaste.